When I say y is equal to b plane, so it is basically y is equal to constant plane. The constant value is b, and it is a xz plane. That means the length and breadth of that particular plane is along the x and z axis. And on any point on this plane is going to have the y coordinate constant, that is b. So if I consider any point, say p, x, y, z, and I incrementally increase the coordinates of that point, it gives me another point, and the incremental value is going to be x plus dx, y plus dy, and z plus dz. So gives me 2 points, p and p dash. Therefore, if I join that 2 points, gives me a differential line element, and it is represented by dl. And we have studied in the last lecture how to write down the vector pp vectors. So I am now writing vector pp dash. Okay, so it's going to be the coordinates of p dash minus coordinates of p, and therefore this particular expression has come. Okay, this particular expression has come. Okay, so differential line element is a distance between, or it is a vector between the 2 points p and p dash. So this point p is the intersection of 3 planes. This point p dash is the intersection of another 3 planes. So together I have 6 planes, and therefore I can get this particular 6 plane structure. You can say cube or cuboid, whatever. Excuse me, ma'am. Yes, बेटा बोलो. मैम आपका पॉइंटर है ना विजिबल नहीं है, तो आप कहाँ पे पॉइंट आउट कर रहे हो मालूम नहीं पड़ रहा है. अभी देखो, अभी दिख रहा है? Can you see? नो मैम, आई गेस आप पेन यूज कर रहे हैं इसलिए शायद नहीं शो हो रहा. Now दिख रहा है अभी? नो मैम, सॉरी, अभी भी मैम दिख रहा है रेड कलर. हाँ, वो मैंने आज थोड़ा सा नेट का इशू रहेगा, और ये पीसी भी बहुत स्लो है जरा. ओके, सो आई विल गो. हाँ बेटा बोलो. मैम वो कर्सर नहीं दिख रहा, अगर आप पॉइंट आउट कर रहे होंगे ना कुछ तो. हाँ, कर्सर क्यों नहीं दिख रहा? रेड लाइन शो हो रहा है, वो पॉइंटर शो नहीं हो रहा. Okay, so I'll draw a line wherever I'm pointing, or wherever I'm showing you the referring to. Okay. Okay, ma'am. Yeah. So I was referring to this this particular diagram. I'm referring to this diagram. So this diagram has as you can see 6 surfaces. Okay, and these 6 surfaces are corresponding to 2 points. Okay, that is p and p dash. Okay, so if this is p, if this point is p, okay, then maybe somewhere else, maybe exactly on that side, this point is there. This is p dash. Okay, somewhere exactly diagonally opposite there is one point. So there are three surfaces corresponding to p. Okay, and there are 3 surfaces corresponding to p dash, and I'm joining this particular distance, which is p dash, p dash. This is the vector I'm referring to, that is differential line element p dash. Okay, so these 2 points, if I join the corresponding planes, gives me a cuboid. Okay, so there are going to be 6 differential surfaces. Okay, that is 2 surfaces will be x is equal to constant, 2 surfaces will be y is equal to constant, and 2 surfaces will be z is equal to constant. So please remember that in this particular subject, any differential surfaces is going to be a vector. So it has to be shown with the magnitude and the direction as well. So if I'm writing the surface area of x is equal to constant surface, it is shown by ds. Since it is a differential means the small area. Okay, so though you can see the big
cuboid here, but it is actually a very small cuboid. Okay, so it is, you can say it is a magnified 100 times and then shown you in the diagram. So this differential surface area, the magnitude is going to be dy dz, because this is x is equal to constant surface. Okay, so this is the surface I am referring to. This is xy surface. This is xyz surface. Sorry, because it is x is equal to constant. So it has a length and breadth as dy and dz. So multiplying the x and y length and breadth, I am getting the magnitude, that is dy dz. And as you can see, ये जो plane है, okay, इस plane को perpendicular axis कौन सा है? It is x axis. So जो हम लोग direction दिखाते हैं, because it's a vector, the differential surface element is a vector, it has to be shown with magnitude as well as direction. So magnitude तो हो गया dy dz, और उसका जो direction है, it is shown by a unit vector which is perpendicular to it. This statement is very important. It should be shown by a unit vector which is perpendicular to it. तो आपको कैसे सोचना है, अगर yz plane है तो कौन सा एक्सिस परपेंडिकुलर जाएगा? x के अलाउन कौन सा यूनिट वेक्टर रहता है? a बार x, एंड देयरफॉर यहाँ पे लिखा है a बार x. सेम लॉजिक गोज फॉर y इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड z इज इक्वल टू कांस्टेंट. और अगर मुझे इस पर्टिकुलर क्यूबॉइड का वॉल्यूम लिखना है तो इट विल बी लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट. ओके, सो देयरफॉर द इसका वॉल्यूम क्या होगा? dx dy dz. This will be the volume of this particular small cuboid which is formed. Okay, and it is not a vector. Okay, it is a scalar value, dx dy and dz. Okay, so this is what we have already studied in our last lecture. Now the same logic has to be applied to the cylindrical coordinates. Okay, I hope it is clear with everyone. Yes, ma'am. Okay. Due to network issues, I am getting a very slow response. Let's go ahead with the cylindrical coordinates. Once these concepts are clear to all of you, then I think solving a problem, it's not going to be. Okay, so now let's look at the cylindrical coordinate system. So as you can see, in the cylindrical coordinate system, there are two planar surfaces, okay, and one surface is a cylindrical surface. So I'm little bit making the system complicated. Okay, so in the rectangular coordinates, that all the three planes we are talking about. Miss, PPT is not visible. नहीं दिख रहा है? No, Miss, वही वो Okay. वॉल्यूम वाला स्लाइड दिख रहा है. वो मैंने बोला ना, थोड़ा नेट का इश्यू है, मैं फिर से शेयर करती हूँ. दिख रहा है क्या? देखो, मुझे बताओ. Yes, Miss. Okay, so as you can see, in the rectangular coordinate system, there were three planes which were planar in nature. अभी क्या है? दो प्लेन से which are planar, and एक जो plane है, it is cylindrical. Okay, so now the point that we are going to show in the cylindrical coordinate system is going to be shown like this. So there are three planes. Which are the planes? The planes are r is equal to constant, z is equal to constant, and phi is equal to constant. Okay, so let me visualize those. Okay, so all of you can see my, I'm starting my video. All of you can see me. Okay, so this is my cylinder. All of you can see the cylinder. Okay, और जो cylinder का axis जो दिख रहा है आपको. Okay, so you can imagine that the axis of this cylinder, assume this sanitizer bottle as a cylinder.
एंड उसका जो एक्सिस है दैट एक्सिस इज जेड एक्सिस. ओके, सो ये द सरफेस ऑफ दिस सिलेंडर is going to be one surface where the r is constant. So you take any point. So when I say r, it is a radius I am talking about. Now you take any point on this surface. Point यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, किधर भी हो point. The radius is going to be constant. Please remember, in the coordinate system, whichever plane you are referring to, okay, if you are referring to x is equal to constant, that means उस particular plane पे x का value constant होना चाहिए. So similarly, this is that plane, this is that surface where that is the outer surface of the cylinder where r is constant. So you take any point, यहाँ पे लो point. The radius is constant. What is radius? Radius is a perpendicular distance. ओके, सो अगर पॉइंट यहाँ पे है आपका, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो. दैट इज माई रेडियस. अगर पॉइंट यहाँ पे है तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो. दैट इज माई रेडियस विच विल बी कांस्टेंट. सो दिस इज. हेलो. हाँ बोलो. मैम, रेडियस विल बी इन पैरेलल विद दैट x कोऑर्डिनेट, राइट? No. रेडियस मतलब, सपोज 1 minute, I'll just get my pen. ओके, सो सपोज मेरा पॉइंट यहाँ पे है. सपोज माई पॉइंट इज हियर, देन आई ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन द एक्सिस. जो भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगी, तो ये जो पेन दिख रहा है ना, दिस इज, सो नॉट नेसेसरली एवरी टाइम इट इज गोइंग टू बी पैरेलल टू y एक्सिस और x एक्सिस. सो इमेजिन करो कि अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ, सो ये परपेंडिकुलर अगर मैं एक्सटेंड करती हूँ बाहर, सो मेरा जो r वैल्यू है, दिस r वैल्यू इज इंक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन. ओके, सो ये जो सरफेस है, जो बॉटल का बाहर का सरफेस, दैट इज द सरफेस आई एम टॉकिंग अबाउट. एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन द एक्सिस फ्रॉम द पॉइंट दैट यू हैव लोकेटेड is my radius, which will be constant. Okay, this is r is equal to constant surface. दूसरा सरफेस कौन सा है? z is equal to constant. Z is equal to constant surface अपना जो रेक्टेंगुलर वाला है वही है. Okay, so it is the surface, this surface. So it can be the bottom of ये जो surface है, this is also z surface. Okay, ये ceiling है. Okay, so this is why z is equal to constant surface. Okay, so z is equal to constant surface. और ये सिलेंडर अगर एक दूसरे को कट करेंगे तो मुझे सर्कल मिलेगा. The intersection will be a circle. Okay, अभी उसको और एक सरफेस मिलने वाला है, and that is, okay, so imagine करो that ये जो पेन दिख रहा है ना, इट इज एक्सिस. हाँ, सपोज इमेजिन करो ये एक्सिस है तुम्हारे सिलेंडर का, एंड देयर इज वन प्लेन विच इज माय फोन. इसका एक जो एज है, इट इज कनेक्टेड टू द एक्सिस एंड इट इज मूविंग लाइक दिस. समझ में आ रहा है? इट इज मूविंग लाइक दिस. दिस इज माय अनदर प्लेन. ओके, सो ये जो प्लेन है. ओके, सो नाउ आई विल जस्ट ड्रॉ अ डायग्राम. सो जस्ट इमेजिन करो ये वो प्लेन है जो मैं दिखा रही हूं आपको. This is the plane which I am showing. This particular plane. Okay, this is phi is equal to constant plane. This plane. तो ये प्लेन का ये जो एज है ना, ये एज जो अभी मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ये एज, दिस एज कोइंसाइड्स, अभी वो दिख नहीं रहा है, बट इट विल गो इनसाइड एंड इट विल बी, और ये अंदर जाके ये, दिस इज द प्लेन. ये अंदर का जो लाइन है ना, ये रेड कलर जो अभी ड्रॉ कर रही हूँ, वो आपको अंदर से दिख नहीं रहा है. सो इसका ये जो प्लेन है, इसका जो एज है, ये दिस एज इज नथिंग बट जेड एक्सिस. सो देयरफॉर ये ऐसा मूव होता है. इट मूव्स लाइक दिस. ओके, जैसे तुम्हारे नोटबुक के पन्ने ऐसे घूमते हैं ना, वैसा. सो ये जो प्लेन है, दिस पर्टिकुलर प्लेन इज फाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. अभी ये फाई क्या है? Phi is an angle. This particular plane makes an angle with XZ plane. XZ plane मतलब ये X है और ये तुम्हारा Z है. So ये जो एंगल होता है ना, ये एंगल बिटवीन, दिस इज XZ plane.
this is z and this is x, और आई एम टॉकिंग अबाउट दिस प्लेन, ये प्लेन ऐसा घूम रहा है, तो जो मेरे हाथ के बीच का जो एंगल दिख रहा है आपको, दैट इज फाई. सो फाई इज एंगल बिटवीन टू प्लेन्स. विच आर द टू प्लेन्स? z x, ये एक प्लेन है और दूसरा प्लेन है एनी प्लेन जिसका एक एज है z एक्सिस. दिस इज z एक्सिस. सो ये जो प्लेन है ना, ये जो एंगल है, दिस एंगल इज फाई. सो सपोज तुम्हारा, so this phi is always going to be constant when you define this particular plane. This particular plane का location fix हो गया, phi is equal to constant, तो ये angle नहीं बदलेगा. This angle will be same. अगर ये ऐसा ऐसा है, ओके, ये तुम्हारा सपोज ये z एक्सिस है, ओके, सो ये तुम्हारा प्लेन ऐसे घूम रहा है ना, तो अगर मैं बोलती हूँ ये प्लेन का यहाँ पे फिक्स हो गया, तो दिस एंगल इज गोइंग टू बी ऑलवेज कांस्टेंट. तो ये कितना घूमेगा? ओके, सो व्हाट विल बी द रेंज ऑफ फाई? तो फाई का सबसे मिनिमम वैल्यू कितना होगा? दैट विल बी 0. सो व्हेन दीस टू प्लेन्स कोइंसाइड, द एंगल इज 0. ओके, एंड देन इट विल मूव. ओके, देन इट विल मूव. ये ऐसा ऐसा पूरा घूमेगा और ये पूरा ऐसा रोटेट होगा ये z एक्सिस के ऊपर. सो मेरा इसका रेंज क्या होगा? फाई का रेंज होगा 0 to 2 pi. That will be my range. So when it will be 0, when these two planes will coincide, and 2 pi when they will coincide on the back. ये पीछे जाके भी coincide होंगे ना. So 0 to 2 pi or 0 to 360 degree is the limit of phi. Okay, that is the minimum and maximum limit of phi. So intersection of these three planes is going to be a point in the cylindrical coordinates. Ma'am, currently it is at a 0 position, right? At 0 degree position. It is, take 1 minute. I'll just show you 1 minute. Also, ma'am, the book which you suggested, in that it is mentioned that phi is less than 2 pi. It is not equals to 2 pi. So I also had to ask about that. Phi can be 2 pi. देखो ये है ना, दिस इज x, दिस इज z एंड x, और ये है तुम्हारा, ये दिस इज अनदर प्लेन आई एम टॉकिंग अबाउट. ये ऐसा घूमता है. सो व्हेन दिस इज हियर, एंगल इज 0. फिर ये ओपन हो गया, अब ये एंगल चालू हो गया, अब ये पीछे से भी ऐसा कोइंसाइड हो गया, तो एंगल हो गया 360. ओके, अभी ओपन हो गया, अभी एंगल चालू हो गया. ओके, एंगल इंक्रीज हुआ, अभी ये हो गया 180, अभी और इंक्रीज हुआ, और ये पीछे से भी इसको कोइंसाइड हुआ. सो एंगल विल बी 20, एंगल विल बी 0 and 2 pi. It cannot be less than 2 pi. It can be less than 2 pi, but maximum limit is going to be 2 pi. So maybe practically you cannot imagine two planes to be coinciding with each other. So it maybe that is the reason they have written that. Ma'am, there will be 2 plane or single plane? 2 planes ना, I am talking about 2 planes. एक है zx plane और दूसरा है, एक है z. Okay, this is z and this is x. और दूसरा जो प्लेन है उसका एज z एक्सिस पे है, दिख रहा है, उसका z एक्सिस पे, और वो ऐसा घूम रहा है. सो व्हेन इट कोइंसाइड्स विद xz प्लेन, द एंगल इज 0, देन इट विल इंक्रीज. फिर ये एंगल इंक्रीज हो गया, ये पीछे से भी कोइंसाइड होगा, तो इसका एंगल होगा पूरा 360 डिग्री, पूरा 360 डिग्री. इसलिए द मिनिमम लिमिट इज 0, मैक्सिमम लिमिट इज 2 pi. So these are the 3 planes in the cylindrical coordinate system. Okay. Ma'am, can you again explain that for z is equal to constant plane? Z is equal to constant means ये जो सिलेंडर है ना, ये सिलेंडर एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, दूसरा ये प्लेन जो हॉरिजॉन्टल है. Z is equal to constant. जो रेक्टेंगुलर में मैंने बोला था ना, फ्लोर और सीलिंग, सेम प्लेन. ये एक प्लेन है,
जो इसको ऐसा इंटरसेक्ट करता है, और तीसरा प्लेन ये है जो ऐसा मूव होता है. These are the three planes. Okay, so when two planes, when one cylindrical plane and one planar plane intersect, then you get a circle. And when that circle is going to be cut with a planar surface, you get a point. So this is how you get a point in the cylindrical systems. So again, in cylindrical systems, there are three axes. So can you see these three axes? So जैसे rectangular coordinate system में तीन axes कौन से होते हैं? A bar x, A bar y, A bar z. A bar x is along the increasing direction of x. That means here, this is direction of A bar x. A bar y का direction क्या होगा? Increasing direction of y. और A bar z का direction है increasing direction of z. This is what, ये जो blue color, ये red color से दिखाया, that is my rectangular coordinates का unit vectors. अभी ये जो suppose this is a point है, ये point है suppose, हाँ, इस point पे this is a point जो suppose this point P, ये point P है in the cylindrical coordinates. So this point lies in all the three planes, right? Because it is an intersection of three planes, so it has to lie on all the three planes. So as you can see, this point lies on the three planes. तो इस particular point का A bar Z कैसे होगा? A perpendicular which is going along Z axis. So ये हो गया A bar Z. A bar R कैसे होगा? A bar R इस point से तुम्हारा R perpendicular draw करोगे यहाँ पे, that will be my radius. Okay, and then extend that radius outward. Because why outward? Because R is increasing in this direction. So R जिसमें increase होता है उस direction में A bar R रहेगा. Okay, और ये जो तुम्हारा plane है, ये जो plane है, this is phi is equal to constant plane, जो मैं अभी दिखा रही हूँ. This is phi is equal to constant plane. तो ये plane increase कौन से direction में होगा? ऐसे direction में होगा ना increase. ओके, मतलब इट विल गो इनसाइड, ये ऐसा इंक्रीज होता है, इट इज गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ योर मोबाइल और योर लैपटॉप, विच एवर यू आर सीइंग दिस लेक्चर. सो इसलिए ए बार फाई जो होता है ना, इट इज गोइंग टू बी अ वेक्टर विच इज गोइंग इनसाइड. दिस ए बार फाई विल गो इनसाइड द प्लेन ऑफ योर लैपटॉप. दैट मीन्स ए बार जो यूनिट वेक्टर होता है वो हमेशा इंक्रीजिंग डायरेक्शन में जाता है. तो फाई कौन से डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है? फाई इंक्रीज हो रहा है और डायरेक्शन विच इज गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर और प्लेन ऑफ लैपटॉप. यू आर सीइंग दिस. सो देयरफॉर पॉइंट विच इज गोइंग टैंजेंट इज गोइंग टू बी द डायरेक्शन ऑफ ए बार फाई. अगर पॉइंट यहाँ पे है, सपोज यू टेक एनी पॉइंट पी डैश, यू टेक एनी पॉइंट हियर, सपोज दिस इज पी डैश, तो इसका यूनिट वेक्टर कैसा रहेगा? दिस विल बी ए बार जेड, दिस इज ए बार जेड. ओके, ए बार एक्स विल बी, यू ड्रॉ परपेंडिकुलर और उसको बाहर एक्सटेंड करो. ओके, और ए बार फाई कैसे रहेगा इसमें? अभी पॉइंट किधर है? पॉइंट यहाँ पे है, तो ए बार फाई कैसे इंक्रीज होगा? इस डायरेक्शन में. सो ए बार फाई विल बी इन दिस डायरेक्शन. सो इफ यू रिमेंबर कि एक स्टेटमेंट किया था हमने, that in rectangular coordinates, so I'll just this is the direction of a bar z. Okay, this is the direction of a bar r, and this is the direction of a bar phi. So हमने एक स्टेटमेंट किया था कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में पोजीशन कुछ भी हो, डायरेक्शन ऑफ ए बार एक्स, ए बार वाई, ए बार जेड विल बी सेम. बट इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स द डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द पॉइंट. सो दैट दिस इज व्हाट इज द डायरेक्शन. पोजीशन, ये पोजीशन चेंज हो गया तो देखो ए बार आर का डायरेक्शन, ए बार फाई का डायरेक्शन चेंज हो गया. So in the cylindrical and spherical coordinates, because of this circular planes and the spherical planes, the complicated systems comes into picture.
the unit vectors also changes the direction. Okay, so this is a direction of unit vectors, that is a bar z, a bar phi, and a bar r. So abhi, how to write down a cylindrical element, line element, how to write down the expression for write down expression for differential volume and differential surface. So can you see this surface जो तुम्हारा cuboid हुआ था ना, उसके जगह अभी ये एक surface बना है. Again this is, suppose this is P. If this is P, again the same, this is P and P dash. So P corresponds to any point. तो अभी point कैसे लिखते हैं in coordinate systems? Okay, you write down a point P as R. तो हमेशा याद रखो, अगर आपको रेडियस को रेफर करना है तो आप स्मॉल r यूज करोगे. If you are referring to a vector, then it has to be a capital R. Please get this at this only in the beginning, because we'll be using small r and capital R also later in the problems. So small r सिर्फ तभी यूज करो जब भी आपको रेडियस को रेफर करना है. Okay, so nobody will write down the unit vector a bar r as a suffix r. ऐसा नहीं लिखना है. Okay, it has to be small r. So when it is this, that means it is a unit vector which is along the radius. Okay, so जब भी आप point कोई लिखते हो, so it is phi and z. This is how you write down any point r phi z. Okay, so p dash क्या होगा अभी? P dash will be equal to r plus dr. phi change हो गया, phi plus d phi. So जो phi 60 डिग्री था, अभी वो 80 डिग्री हो गया. ओके, और z क्या होगा? z plus dz. ओके, सो दिस इज द 2 पॉइंट्स. लेकिन जब भी आप वेक्टर लिखोगे, तभी वेक्टर लिखने के टाइम आप यू कंसिडर द आर्क लेंथ एंड नॉट, बिकॉज नाउ दिस इज गोइंग टू बी द आर्क. जब भी आप एंगल इंक्रीज करते हो, तभी इफ यू जस्ट सी दिस डायग्राम, this is the arc which is formed and it is because of the changing of the phi. ये ऐसा arc बना है. So we take the arc length. Okay, so instead of taking only r, here there is r d phi. ये r क्यों आता है? Because this is arc length. Okay, because you are going to get this kind of structure. Okay, जैसे आपका पेस्ट्री होता है ना, वैसा. So this is the angle. दिस इज द एंगल डी फाई. इतना इंक्रीज हुआ ये एंगल. इसलिए हम लोग सिर्फ जैसे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में हमने लिखा डी वाई, डी जेड, डी एक्स, वैसा नहीं लिख सकते हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे आएगा आर डी फाई. ओके, सो जब भी आप इसका वेक्टर लिखोगे, तभी क्या होगा? आर प्लस डी आर माइनस आर विल बी यहाँ पे डी आर होना चाहिए, वहां पे डी आर. ओके, फिर ये जो है फाई और डी फाई माइनस डी फाई प्लस डी फाई, तो माइनस करोगे तो क्या होगा? डी फाई आएगा. लेकिन यहाँ पे सिर्फ डी फाई नहीं लिखना है, यहाँ पे आर डी फाई लिखना है. सो वी आर कंसिडरिंग द आर्क लेंथ. और z प्लस डी जेड माइनस जेड विल बी डी जेड. सो ये यूनिट जो लाइन एलिमेंट लिखा है ना, ये लाइन एलिमेंट ऐसे लिखा है कंसिडरिंग द, जस्ट 2 minutes.
Okay, so that is how you are writing the यू आर राइटिंग द, यहाँ पे आप आर्क लेंथ लिख रहे हो इसलिए आर डी फाई है। तो डिफरेंशियल वॉल्यूम एलिमेंट कैसे लिखते हैं? डिफरेंशियल वॉल्यूम एलिमेंट यू विल राइट डाउन, जैसे हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में कैसे लिखा था, dx dy dz। तो यहाँ पे dx के जगह है dr, dy के जगह है r d फाई। ओके, अभी मैं ऐसे लिख रही हूँ, आई होप इट इज क्लियर। dr, उसके बाद है r d फाई। ओके, और तीसरा क्या है? dz। So in rectangular coordinates you have dx, dy, dz. Okay, that is a length, breadth and height. वैसे cylindrical में you have dr, r d phi and dz as length, breadth and height. So इन तीनों का multiplication करने के बाद मुझे मिलता है volume. Okay. ठीक है। नाउ जैसे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में हमने देखा था वैसा ही यहाँ पे भी there will be 6 surfaces. ओके, ये नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ओके वेट, it's okay, there will be 3 surfaces. There will be 6 surfaces here. Okay, so we will write down the surface area for those 3 surfaces. So जो जो 6 surfaces है उसमें से 2 surface रहेंगे r is equal to constant. ओके, सो अगर r इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है मतलब वो फाई जेड वाला प्लेन है जिसका एक लेंथ है r डी फाई और जिसका ब्रेड्थ है डी जेड। तो उनको मैं मल्टीप्लाई करूंगी डी फाई आर डी फाई। ओके, सो उनका जो सरफेस एरिया क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड विल बी आर डी फाई मल्टीप्लाई बाय डी जेड। ये रहेगा उनका एरिया का मैग्नीट्यूड। अभी मुझे डायरेक्शन लिखा है, तो अगर r इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट प्लेन है तो कौन सा यूनिट वेक्टर इस पर्टिकुलर प्लेन के? ओके, सो a bar r is a unit vector for r is equal to constant plane. So this is how you write down the surface area for r is equal to constant. So अगर phi is equal to constant, ये जो 2 सरफेसेस है उनका एरिया कैसे लिखूंगी मैं? फाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट सरफेसेस है मतलब ये एरिया कौन सा है, जिसका लेंथ है डी आर और जिसका ब्रेड्थ है डी जेड। तो उनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी, ओके, उनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो आएगा डी आर मल्टीप्लाई बाय डी जेड। ये हो गया एरिया फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया डी आर इंटू जी जेड। और डायरेक्शन क्या होगा उनका? डायरेक्शन विल बी a bar phi. Okay, so you always write down the differential area as a vector. So it is differential area vector. Okay, so now for z is equal to constant, can someone tell me how will I write down the magnitude? मैग्नीट्यूड कैसे लिखूंगी इसका मैं? लेंथ क्या होगा, ब्रेड्थ क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखूंगी इस पर्टिकुलर z इज इक्वल टू कांस्टेंट वाले प्लेन का? r divided dr. Okay, so it is going to be dr into r d phi. So length will be dr. So you have to be very specific. हाँ, अगर आपको अगर प्रॉब्लम आपका z इज इक्वल टू कांस्टेंट में है लेकिन जो पॉइंट दिया हुआ है या फिर जो वेक्टर दिया हुआ है उसमें अगर dx dy dz नहीं है, दैट मीन्स इट इज इन रेक्टेंगुलर। क्योंकि देखो z इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ये रेक्टेंगुलर में भी आता है और ये सिलेंड्रिकल में भी आता है, लेकिन उनका सरफेस एरिया का एक्सप्रेशन known as ds is equal to dx dy.
ओके, ए बार जेड। लेकिन सिलेंड्रिकल में हम लोग कैसा लिखते हैं, डी आर डी फाई डी ए बार जेड। ए बार जेड इज अ यूनिट वेक्टर। Okay, so this is how you write down the expressions in cylindrical coordinates, right? Now we will go ahead with the concept of, but we'll take a break for 5 minutes, and then we will understand the concept of gradient, divergence, and curl. So it's 10:25 right now in my watch, and I'll be starting again at 10:30. So I request students to take a short break and come back to their places at 10:30. Thank you.
Okay, I request students to please resume to their places. So we'll start the concept of divergence. Okay. I'll just share that screen. So first we will see the concept of divergence. Can you see the screen? Yes, ma'am. So we will see the concept of divergence, curl and gradient. Now this particular concept you have already studied in mathematics. So if I ask you the meaning of divergent, somebody is divergent. Okay, well, how will you express the meaning of divergence? Divergence का meaning क्या है? मैम इन मैथमेटिकल टर्म और बाय कॉन्सेप्ट वाइज? Concept wise मुझे बताओ, mathematical term, concept wise what is the meaning of divergence? Can I say it is spreading? यस मैम. Can I say it is spreading? So any field which is spreading in nature, okay, think of a sun. Does it energy spreads outside? यस मैम. Okay, live example. Field which is uh, divergence. Okay, so if any point P is located and the field is going out of that particular point in the direction of in the outward direction. So in mathematically, if you talk, what is the divergence of any vector V? V कोई एक vector है. So I can write down this V as in rectangular coordinates. I write down this V vector as V is V bar. Bar matlab vertical line on the top. Don't forget that. Is going to be Vx a bar x plus Vy a bar y plus Vz a bar z. ये तुम्हारा वेक्टर है. Vx a bar x plus Vy a bar y plus Vz a bar z. दिस वेक्टर. ओके, सो इस वेक्टर का अगर मुझे डाइवर्जेंस कैलकुलेट करना है तो मैं क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन करूंगी? आई विल राइट डाउन दिस एज डाइवर्जेंस ऑफ v and I will multiply this v with another vector which is a del vector. Okay, so अगर मैं del vector को अगर मुझे लिखना है, okay, so I write down this del vector as daba by daba और del vector. Okay, I write down अभी इसको मैं directly is equal to daba by daba x a bar x plus daba by daba y a bar y plus daba by daba z a bar z. This is my vector which is this triangle which is exactly ulta. Okay, so this is a del vector. Okay, so I write down this del vector like this. This is a del vector, huh? Which is daba by daba x a bar x plus daba by daba y a bar y plus daba by daba z a bar z. So when I do a divergence, I am basically multiplying two. I am taking a dot product of two vectors. So dot product of two vectors is going to be a scalar value that we have seen earlier. So divergence results into a scalar value. Please remember this. This scalar value can be positive. This scalar value can be negative.
and this scalar value can also be 0. Okay, so with respect to the subject, how do you interpret this? So therefore, if I multiply, okay, if I multiply these two vectors, I'm going to get dabba by dabba x. जो x coordinate है, x का जो coefficient है, उनको multiply करना है, as we have seen. Okay, so x का coordinate क्या है इसका? इसका है vx, इसका है dabba by dabba x. तो इसको multiply किया. Then इसका dy है, दूसरा इसका coefficient है dabba by dabba y, उनका multiply किया. All dabba by dabba z into vz. So I'm basically multiplying the x coordinate of both here, y coordinate of both here, and z coordinate of both here, and this results into a divergence of v. Okay, so there will be a scalar value. This scalar value depending on the coefficients and depending on the additions can be either positive, negative, or 0. Okay, so when I say positive divergence, okay, that means if it is increasing, the rate at which it is increasing, because I am calculating the dabba by dabba x, that means it is a rate of change of the magnitude. Okay, so if I'm getting a positive divergence, okay, if the spreading is like this, I'm getting a negative direction if the spreading is exact. It is not diverging, it is converging. So exactly opposite to diverging is convergent or converging. So if any field is converging, it can be called as a negative divergence. And if it is neither diverging nor it is converging, then the field is called as a zero divergence. I'll explain this with a very simple example that we have in our house. Okay, and you must have seen this. All of you have a tank. Okay, maybe at the roof you have a tank. All of you have a basin, a sink in your place. Okay, so whenever the tank is filled, okay, this is also a vector because this is a flow of water. So the tank has a outlet here and the water flows like this. Okay, so anything which is coming, which is spreading out, positive divergence. This is at this point if you calculate, ये point पे field का direction और अपना जो field है, जो vector है वो spread हो रहा है, converge हो रहा है. So यहाँ पे ये spread हो रहा है. So this vector which is the direction of or the water which is flowing has got some direction, कुछ magnitude है, इसलिए vector है. What is at this point? ये point पे क्या हो रहा है? इस point पे from this it is converging, from this it is diverging. So at this point, if you talk at this point, the field is neither converging nor it is diverging. It is it is nor converging because एक साइड से अंदर जा रहा है, दूसरे साइड से उतना ही वॉल्यूम बाहर आ रहा है. ओके, आई एम क्लियर हियर. एक साइड से पानी अंदर आ रहा है और दूसरे साइड से वो बाहर भी जा रहा है. Of your pipe, the field is such that it is having zero divergence. अभी दूसरा पॉइंट लो, यहाँ पे क्या हो रहा है? The field is converging. You're filling it. हाँ, ये suppose bucket है. You're filling this particular water. Okay, so this is a negative divergence. So in mathematics you have studied this, but this particular concept or this particular phenomenon, you use it or you see it in your day-to-day life. Okay, so that is what is the positive divergence, negative divergence, and the zero divergence.
Okay, so I'll just read out. Physically, the divergence of a vector quantity represents the rate of change of field strength in the direction of field का strength का rate अगर increase हो रहा है, so it will diverge, right? So the meaning of the divergence of any vector is basically rate of change of field का strength in the direction of field. If the divergence of a field vector is positive, then at a point, then something is diverging from a small volume around the point as a source. So if at that point the field is spreading, then that point can be seen as a source. So apna jo sun hai, it is a source, because from that point, if you consider sun as a point, okay, then from that point the energy is spreading. Okay, it is, the divergence is going to be positive. So you can assume that or you can imagine the sun as a point and assume that as and it can be called as a source. If the divergence of a field vector is negative, the something is converging into a small volume, and that point is called as a sink. Okay, if anything is converging in a small volume, then that point is called as a sink. If the divergence at a point is zero, the rate at which something is entering a small volume and something is same as the rate at which the that particular vector is leaving the small volume. Okay, that is basically a zero divergence. So any field which has zero divergence is called as a solenoidal. Any field whose del dot, suppose I write here divergence of any field is zero. Suppose I Miss, write, it is not visible. What you are writing, Miss? अभी देखो, अभी लिख रहे हाँ हो. मिस, अभी दिख रहा है. So divergence of any field, suppose field A is zero, then I called this field as a solenoidal. So divergence of any field is zero, that means that field is solenoidal. So in this particular subject, we are going to talk of electrostatics in the beginning. So I'm going to talk of static electric field. I'm going to talk of static electric field. I'm going to talk of static magnetic field. Okay, so tell me which of this field is going to be solenoidal. Ma'am, if field. E field is solenoidal. E field, सपोज पॉजिटिव चार्ज है तो आप 12th में उसका फील्ड कैसे दिखाते हो, ऐसा? Am I right? This is how you show the electric field of positive source or positive charge. Am I right? Yes, ma'am. So is it zero divergence or it is positive divergence? Positive. Suppose negative charge है तो आप कैसे दिखाते हो? Inward. Inward. So it is converging. Yes, ma'am. So positive charge is a positive divergence, negative charge is a negative divergence. So electric field तो हो ही नहीं सकता. So can a magnetic field be a solenoid? Yes, ma'am. Suppose I draw a magnet here. Suppose I draw a magnet here. Okay, south and north pole. अभी मुझे बताओ फील्ड कैसे होता है, कहां से कहां जाता है? North to south. बराबर. This is how it goes. So you take any point. You take any point on the magnet or any point here. जितने फील्ड लाइंस इस पॉइंट के अंदर आ रहे हैं उतने ही बाहर जा रहे हैं. Yes, ma'am. Am I right? So can I say static magnetic field is a solenoidal field? Because its divergence is going to be zero. Because the rate at which it is, जैसे ये जो स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट उसको एप्लीकेबल होता है. The rate at which, suppose you consider a small volume here.
you consider a small volume here. Volume एक कोई भी एक क्यूबॉइड या कुछ भी अज्यूम करो यहाँ पे. सो जितने मैग्नेटिक लाइंस अंदर आएंगे उतने ही बाहर जाएंगे. Okay, so therefore always remember that static magnetic field is the example of a zero divergence, whereas electric field is a example of positive or negative divergence. Okay, so this is a simple concept of divergence in mathematics applied to this subject. Let's talk of curl. Curl is basically when you take a cross product of two vectors. Which are the two vectors? First is a del vector and another is any vector which is suppose v. So आपको याद है हमने कैसा क्रॉस प्रोडक्ट से कैसा फाइंड आउट किया था उसका. सो इसका जो रिजल्ट आने वाला है इट इज ऑल्सो वेक्टर. सो जैसे मैंने बोला डाइवर्जेंस का रिजल्टेंट होने वाला है स्केलर वैल्यू. सो इट विल हैव अ पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू. वैसा ही कर्ल का जो रिजल्टेंट होने वाला है इट इज अ वेक्टर. और ये वेक्टर कैसा होता है? इट इज परपेंडिकुलर टू द बोथ टू वेक्टर्स. इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर. ओके, सो आप लोगों ने कभी स्क्रू ड्राइवर से कुछ घर में काम किया है? तो स्क्रू ड्राइवर आप ऐसे घुमाते हो. आई एम मूविंग दिस पेन इन द क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाती हूँ तो ये नेल जो है, सपोज दिस इज अ नेल, इस नेल को अगर मैं स्क्रू ड्राइवर से ऐसा क्लॉकवाइज घुमाती हूँ तो ये अंदर जाता है. एम आई राइट? इट गोज इनसाइड. और अगर उसको उल्टा घुमाती हूँ तो ये बाहर आता है. सो आई एम मूविंग दिस नेल इन दिस डायरेक्शन. इस प्लेन में आ रहा है वो, ऐसा ऐसा घुमा रहे हो, लेकिन उसका मूवमेंट कैसे हो रहा है? ऊपर नीचे, परपेंडिकुलर है. सो ये जो घूमने वाला जो डायरेक्शन है इट इज माई इनपुट कर्ल. और जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट क्या हो रहा है? रिजल्ट क्या मिल रहा है मुझे? ये नेल जो है ये आइदर नीचे जाएगा या फिर ऊपर आएगा. सो इजंट इट परपेंडिकुलर? सो दिस इज द लाइव डे टू डे एग्जाम्पल ऑफ कर्ल. सो कर्ल मीन्स एनीथिंग. Ma'am, your slide is still on the divergence. अरे बाप रे, नहीं आया. No. 1 minute. Share once again. अभी दिख रहा है? Yes, ma'am. Curl of a vector field. ओके, कर्ल दिख रहा है. सो ऑलवेज रिमेम्बर, कर्ल का जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है. ओके, सो दिस रिजल्ट्स इनटू अ वेक्टर एंड द डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर. ओके, सो इसको कैलकुलेट कैसे करना है मैथमेटिकली? आप ऐसे करते हो ना, आई जे के. सो आई जे के जगह हमारे यहाँ पे आएगा ए एक्स, ए बार एक्स, ए बार वाई, ए बार जेड. ओके, इफ इट इज अ रेक्टेंगुलर देन यहाँ पे आएगा ए बार एक्स, और यहाँ पे आएगा ए बार एक्स आएगा. ओके, यहाँ पे आएगा ए बार वाई. ओके, यहाँ पे आएगा ए बार जेड. ठीक है, यहाँ पे आएगा डी एक्स डी बाई डब्बा बाई डब्बा एक्स डब्बा बाई डब्बा वाई डब्बा बाई डब्बा जेड. एंड वी एक्स वी वाई वी जेड इज द कोएफिशिएंट along एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन. So what is the meaning of curl basically? Okay, so as it is written, physically the curl of any field vector is a rate of change of field strength in the direction right angles to the field and is a measure of rotation of something in the small volume. Okay, so suppose आप ये तुम्हारा suppose this is your wall. इस वॉल पे आप स्क्रूइंग कर रहे हो, तो ये जो जहां पे स्क्रूइंग कर रहे हो उस पॉइंट पे जो छोटा वॉल्यूम आप कंसीडर करोगे. सो इफ यू आर रोटेटिंग, ओके, results into movement of this particular nail either up or downward. Okay, so it is a rate of change of field in the direction right angles to the field. Okay, so इसका another example आपको अगर नेचर में दिखता है, so
जब भी कोई झाड़ का पत्ता नीचे गिरता है तो वो हमेशा ऐसे रोटेशन, गिरने की एक्शन जो है वो नीचे जा रही है, इट इज गोइंग लाइक दिस। लेकिन जो भी पत्ता गिरता है तभी वो ऐसे गोल गोल घूम के जाता है, इट ऑलवेज रोटेट्स लाइक दिस, ऐसे ऐसे घूम के जाता है। अनदर एग्जाम्पल, अगर आपने कभी बहते हुए नदी में, अगर आपने कभी या फिर अगर इफ यू कैन सी स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन, अगर पत्थर डालोगे तो आपको रिपल्स दिखते हैं। वो रिपल्स कैसे होते हैं? आप तो पत्थर ऐसे डालते हो, ऐसे डालोगे, लेकिन रिपल्स गोज बाउंड आउट, बाहर जाते हैं इन द सर्कुलर डायरेक्शन। Another example of curl. So these are example of curl in nature. Okay, with respect to the subject. Okay, with respect to subject, if we talk of curl, then I can say that any field which has a tendency to generate a rotational motion, okay, is basically has, this is an example of curl, जैसे दिखा था वैसे अभी मैंने explain किया। Okay, so if you put a paddle inside the stream of water, the paddle moves. Okay, the paddle moves like this, blue color में जो दिखा है वो। So rotation of a wheel shows that there is the existence of a curl. There is the existence of a curl. So जब भी आपका wheel rotate होता है, so अगर rotational motion generate होता है due to any, okay, so we say that there is a curl which is existing. अगर ये पैडल घुमा ही नहीं, if doesn't rotate, if rotational motion is absent, if it is absent, rotational motion is absent, then the curl is zero. Or I can say del cross A is going to be zero. So curl zero है, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट इज जीरो। सो कोई भी फील्ड का अगर क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आता है उसे हम लोग बोलते हैं इरोटेशनल। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इरोटेशनल। सो इन so now we have static electric field, now we have static magnetic field. Okay, we have E and H, जैसे पहले बोला था वैसे। Which field is going to be irrotational? कौन से फील्ड का कर्ल जीरो होगा? If there is no rotation of paddle, if rotational motion is not produced as irrotational, so इन दोनों में से कौन सा फील्ड है जो रोटेशनल मोशन जनरेट नहीं करेगा? Static electric field. Static electric field. Can you tell me why? The answer is absolutely right. Because the motion is zero there. Charges will be like at constant position. Yes. So what will happen? The charges will be at constant position, or charges will be moving at constant speed. So when you say static, or when you say static, it is with respect to time. It is static, right? Yes, ma'am. Right. So if it is moving, but if it is moving at a constant rate, then even though it is a stationary charges, or it will उसका effect stationary charges जैसा ही है, or it will generate a electric field which will be also stationary with respect to time. So ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड को, या फिर ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो रोटेशनल मोशन जनरेट कर सकता है क्या? No. Versus if I say that your charges are moving but not at a constant rate, okay, it is moving with any variable rate, उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा that will be also not static. It is Yes, ma'am. That will be not time varying. static. But if such electric field, we have seen in the concept of Faraday's law, if this particular field
कट्स, इस पर्टिकुलर फील्ड को कट करता है कोई कंडक्टर, तो व्हाट इज अ जनरेशन ऑफ करंट इज हैपनिंग देयर. करंट, अगर आपका कंडक्टर क्लोज्ड है, then your current is going to be moving in the conductor. Okay, so if the conductor is conductor है, करंट फ्लो हो रहा है, मतलब वो क्लोज्ड है ना, so that means the current is generating. So जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेशनरी है, तो स्टेशनरी फील्ड कैन इट जनरेट अ इलेक्ट्रिक फील्ड, कैन इट जनरेट अ करंट ड्यू टू फैराडेज लॉ. ट्रांसफार्मर को अगर आप डीसी सप्लाई देते हो प्राइमरी में, तो सेकेंडरी में करंट आएगा क्या? विल यू गेट इट? No, ma'am. तो ट्रांसफार्मर में प्राइमरी में आप हमेशा एसी करंट कनेक्ट करते हो. व्हाट इज अ एसी? एसी करंट मतलब इट इज टाइम वेरिंग फील्ड. अगर आप उसको स्टेशनरी फील्ड देते हो प्राइमरी में, तो दूसरे जगह सेकेंडरी में आपको करंट नहीं मिलेगा. सर्कुलर मोशन विल नॉट बी ऑब्टेन्ड. सो सर्कुलर मोशन अगर आपको चाहिए सेकेंडरी में, जो करंट देता है, तो आपको प्राइमरी में टाइम वेरिंग फील्ड ही देना पड़ेगा. एंड जो मैंने यहाँ पे लिखा है, दीज आर स्टेशनरी फील्ड्स. सो विच स्टेशनरी फील्ड इज इरोटेशनल इज इलेक्ट्रिक फील्ड. So static electric field is irrotational because it cannot generate a rotational action. Okay, so इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप अगर जैसे पानी के अंदर ये पेडल रख दिया है, वैसे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर आप कोई भी कंडक्टर डाल देते हो, तो आपको उस कंडक्टर में वोल्टेज इंड्यूस नहीं होगा. लेकिन अगर आप उसी फील्ड में अगर आप वो फील्ड को टाइम वेरिंग करते हो और उसके अंदर आप कंडक्टर को मूव करते हो, देन देयर इज अ चांसेस दैट द वोल्टेज विल बी इंड्यूस्ड. सो देयरफॉर स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इज irrotational, whereas static magnetic field is solenoidal. Ma'am, what if we move conductor inside that static electric Yes, field? but that is if you move the conductor. Okay, if you move the conductor, then um, as per your AC or as per your motor, the back EMF will be generated, but that is not due to the field. That is not a response of a field. Am I right? आपको Okay. कंडक्टर को स्टेशनरी करना है, एंड फील्ड विल टेक केयर ऑफ दिस EMF which is induced. So this field is irrotational if it cannot produce the rotational motion. Okay, so therefore it is a Ma'am, but even if the static charge is constant speed, it will create a magnetic field around it. So the magnetic field is rotational, right? static electric field. मतलब तुम्हारा जो चार्जेस है ना, दे आर स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सो दे विल जनरेट अ मैग्नेटिक फील्ड विच इज ऑल्सो स्टेशनरी. Okay, ma'am. Can you That make is- me imagine how the magnetic field can be static? Like, if d phi by dt is same, देखो, if the magnetic field is also AC in nature, मैग्नेटिक फील्ड भी AC होना चाहिए. Ma'am, if electric Sine wave. field will be AC, then the magnetic field will also be AC because it will be induced at. Okay, that means at every point the rate at which the field change होना चाहिए. It should not be. अगर आपका ये है, क्या है आपका ये मैग्नेट है, मैग्नेट इज ऑलवेज अ स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड. ओके, सो अगर आप स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे आपका डीसी मोटर में क्या होता है, या फिर सपोज यू हैव
or you can say what is the example of Well, it's only for permanent magnet, right? डीसी मोटर में क्या होता है, डीसी मोटर में जो फील्ड जनरेट होता है इट इज कांस्टेंट. Yes, ओके, sir. या फिर आपको क्या करना पड़ता है, सपोज यू टेक अ जनरेटर. जनरेटर में अगर आपको करंट अगर आउटपुट लेना है, अगर आपको जनरेटर से वोल्टेज लेना है, सो जनरेटर के अंदर जो फील्ड होता है वो मैग्नेट होता है अंदर. तो वो मैग्नेट जो है वो मैग्नेट स्टेशनरी होता है. सो यू हैव टू रोटेट समथिंग. एम आई राइट? यू हैव टू रोटेट समथिंग. तो जब भी आप जनरेटर को चालू करते हो तभी आप उसके अंदर जो कंडक्टर्स हैं जिसके अंदर आपका वोल्टेज आने वाला है, आउटपुट आप जहां से लेते हो, उस कंडक्टर को आप घुमाते हो उस स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड में. तो क्या होता है कि वो जैसे जैसे वो कंडक्टर आपके मैग्नेटिक फील्ड को कट करता है, सो इट बिकम्स वेरिएबल. जो वेरिएबल डीफाई बाय डीटी का फील आने के लिए आपको कंडक्टर को मूव करना पड़ता है. दैट इज हाउ द दोज कंडक्टर्स विल हैव अ वोल्टेज. लेकिन इसमें ट्रांसफार्मर में क्या होता है, योर magnetic field itself is variable, so you don't have to move a secondary coil inside that moving conductor, inside that moving magnetic field. आपका जो कंडक्टर है स्टेशनरी है, सेकेंडरी जो कंडक्टर है वो स्टेशनरी है, फिर भी आपको सेकेंडरी में वोल्टेज इंड्यूस होता है. इज इट ओके? आई मीन, सो either your magnetic field has to be changing with respect to time, like your AC. सुनाई दे रहा है? Am I audible Yes, ma'am. now? Yes, ma'am, you are audible. Okay. So these are the two examples of having a Faraday's law work for you. Okay. So static electric field अगर है तो static electric field cannot generate a time varying magnetic field. For your Faraday's law to work, you should have time varying magnetic field. Okay, so time varying magnetic field can be generated with a time varying electric field, or time movement of charges, or movement of a conductor. These are the only two options you have. Okay, and the last in this particular terms are gradient. So gradient is basically again another function. Okay, so gradient is a scalar function. So gradient is a multiplication of del with a scalar value. So phi is a scalar value, it is not a vector. So gradient comes into picture when you have a scalar value. So del ko multiply karna hai with a scalar value. This is not a vector. So there is not a question of dot and cross. You just multiply del with some value, which is a scalar in nature. Okay, so del phi results into a vector. So gradient always results into a vector. Okay, so divergence result into scalar, curl result into a vector which is perpendicular, and gradient results into a vector again because it is a multiplication of a del into a scalar value which is phi. Okay, so this is another term, that is a gradient. So this gradient we are going to use in this particular first chapter itself. So magnitude of this vector gives a maximum rate. Okay, so gradient, अगर आपका इसका वर्ड का मीनिंग है, so it is a steep gradient. जैसे हम लोग when we go in the Ghat region, there is a gradient, road को gradient होता है. So maximum rate of change of this scalar value is directed towards the maximum
change occurs. So जहाँ पे भी the rate of changing of this scalar value is more, that is a direction of that vector. Okay, so in our subject हम लोग डाइवर्जेंस ग्रेडियंट कहाँ यूज करने वाले हो, यहाँ पे, where we are going to use it here. Okay, that is this particular equation. E is equal to minus gradient of V. Okay, minus sign indicates that direction of, अगर V का direction towards V is if it is increasing, okay, in the direction negative gradient of potential. Negative sign indicates that direction of E is opposite to the direction in which V increases. जहां पे पोटेंशियल का डायरेक्शन बढ़ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली अपोजिट होता है, इसलिए वो नेगेटिव साइन दिखाया है यहाँ पे. I take this simple example. We have a rate resistance. यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है. तो मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पे इलेक्ट्रिक ये जो वोल्टेज जहाँ पे बढ़ रहा है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीज ऑफ द वोल्टेज. लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड आप ऐसे हमेशा दिखाते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन. सो ई इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जिस डायरेक्शन में वोल्टेज इंक्रीज होता है उस डायरेक्शन से एग्जैक्टली अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है. इसलिए E is equal to minus gradient of V. So gradient का जो concept है हम लोग इस subject में यहाँ पे use करेंगे. Okay, so this V is a scalar value potential where E is a vector. Okay, so जो हम लोग network theory में जो हम लोग सीखे हैं, with respect to that, if I have to explain this, then if you have a resistor, the voltage drops, the voltage increases. Sorry, I'm sorry. ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव. तो इरेज करते हैं. ओके, सो करंट कैसा फ्लो हो रहा है मेरा, लेफ्ट टू राइट. सो करंट फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर. ओके, सो So as you can see here, direction of current. करंट कौन सी डायरेक्शन में है, करंट इस डायरेक्शन में है. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वेयर एज तुम्हारा जो वोल्टेज है वो ऐसा इंक्रीज हो रहा है. इफ यू टॉक ऑफ राइज इन पोटेंशियल, rise in potential is in this direction, whereas electric field is in this direction. So electric field and potential is exactly in the opposite direction. So all the three concepts, are they clear to everyone, so that we can start with our first chapter? Maybe we can just understand the basics, because it is just, any doubts if you have? किसी को डाउट है क्या? So this is the basic fundamental understanding of the mathematics before we actually start the first chapter. So our first chapter is electrostatics. Okay, you all have studied electrostatics. So basically we talk about the static electric field. So we talk about the charges which are stationary in nature. Okay, so and whenever we talk of stationary charges, there is always a force which exists
One minute, I'll just. Okay, so whenever there are charges, there exists a force between them, and therefore, whenever you start with the electrostatics, you always start with the basic law of the electrostatics, and that is Coulomb's law. Okay, so my presentation is not opening. So all of you have studied Coulomb's law. Can someone just tell me once before my presentation is opened? Coulomb's law कोई बताए? Let me take you to your HSC 2 years back. Am I audible? Am I audible? Yes, ma'am. हाँ तो Coulomb's law बताओ. मैंने ऐसे तो नहीं कुछ डिफिकल्ट तो नहीं पूछा कुछ. Coulomb's law बताओ. Man, it's like a universal square law for the two charges. And what is the mathematical expression? F is equals to k times of a q1 charge, q2 charge times upon r square. Very good. So अभी same Coulomb's law हम लोग पढ़ने वाले हैं. But we are going to write down this Coulomb's law in a vector form. Okay. Wait a minute. Presentation. So maybe today we'll be able to just. But in the beginning, I don't want to rush in just completing the syllabus, because if you just understand the concept, then it is easy for you to. Is the presentation visible? Yes, ma'am. Okay. So first fundamental law of electrostatics